हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का पहला वीडियो है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप यू गाइस फाइंड इट टू योर लाइकिंग। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द वे दैट आई केम अक्रॉस टू ट्रूली लिव योर लाइफ। एज हम सब जानते हैं दैट वी आर मॉर्टल्स, वन डे वी आर ऑल गोना डाई, नोबडी इज हियर इमॉर्टल, बट वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट। आई मीन हमारी जनरेशन, लाइक वी ऑल इंक्लूडिंग मी समटाइम्स, what we do is just keep on wasting our times. We scroll reel and we just, even if we don't waste our time, we simply do nothing, and that is just a waste, a pure waste of human life, if we think about this. And this project contains the ideal ways that I think are mandatory to live your life perfectly. Now I will call this PWCD method. P stands for perceive, W stands for witness, C stands for create, and D stands for document. These four letters, this PWCD method, I will tell you in a while that why this is so important. To follow this path and live your life, as in the end, when death comes to you, you shouldn't feel like that I didn't live a life, or you shouldn't be thinking that what I did in my 70 years of life, I have no data except going for my job, pursuing that degree, getting into that college, you know. So we forget sometimes in this modern time that life has so many deeper perspectives. Like life has so much more to it than we can think. And the limit of my knowledge is the limit of my word. I don't know who stated that. Slavoj Zizek, a Slovenian philosopher, he said that the reason of our unfreedom is that we are not able to articulate our unfreedom into words. He said something similar to that. And this is so true. If we don't know that, yes, these are also the perspectives of life, we will not ever be able to live our life fully. And that is why the first step is to perceive. Perceive as much as you can in all forms. Perceive, learn from a 17-year-old, learn from a 70-year-old. That doesn't matter. It just matters that it's only one life that you and me and everybody else have got. So why don't we just spend it in perceiving and learning everything we could? Like, I don't know that nihilism, we'll talk about that in later videos. I don't know nihilistic behavior. I like simply can't understand why these nihilistic people don't understand that there is so much to life. I'm somewhat talking about existentialism here. Like, we all know that life has no meaning here. Like, life at first you are just born and you have no meaning that is pre-assigned to you. So you have to find your own meaning, and for that the first step you have to take is to perceive as much as you can in all forms and all aspects, from anyone you can, from anywhere you can. And then move to the second step, which is witness, or we can say consume, but witness would be the right word. Witness as much as you can. You have got only one life, and you have to create something out of your life that at the end, when you die, or you just think that what I have done in these past years, you can have a proof, a data, a portfolio of your life that you can look upon and feel good about yourself. Because there will be no point of a human life if we just spend it like this without any purpose or direction. So witness as much as you can. Witness all of the great movies, the masterpieces, the great art, that little mystery of that small town, or it can be that great music that the artist recorded and eventually died after that. There are so many things that are in this life that we should witness. Great songs, great movies, read books, read as much as you can, because one book is one perspective. I repeat, one book is one perspective, and we can't live all the perspectives of life on our own. And that's where the books, the movies, the songs, the stories, all of these, the mysteries, the conspiracy theories, all of these come. And we can live several perspectives in one life by reading, by witnessing
as much as we can in all aspects and all forms. Then the next and the most important step comes create. We are in a situation, we are in a generation where 90% of the people just consume. We consume either digital products, either physical products, either content, either anything, but we do not create anything. And by create, I'm not telling you to set up a business, to set up a startup. I'm just saying to create some form of physical or mental proofs that you have lived your life on a holistic level. For example, write poetries. There is so much to life. We don't read and write poetries because it's romantic. We read and write poetry because we are the member of the human race from the Dead Poets Society. So it's so important that we at least create some things out of our lives that we can look upon back and feel good about that. We can write poetries, we can write stories, we can write books, we can create anything which resembles life. Because life, if we truly talk about living the life, this is the life that we should live. And भाई जॉब लेना और ये सब सेकेंडरी है. रियल पर्पस ऑफ लाइफ तो जॉब नहीं हो सकती ना, ये तो मैन मेड चीज़ें हैं. आखिर रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? नेचर, ब्यूटी एंड आर्ट, जो चीज़ें सच में दिखाती हैं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है. वरना तो फिर भाई आप नाइलिस्टिक सोच लेके बैठे रहो और फिर आप कुछ करो ही मत, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं. So try to create something for your future self that you can look upon. It can be photos, videos, stories, शायरियाँ लिख सकते हो आप. It can be poems, it can be books, anything that you like. It can be paintings, anything of your liking. And the last step, document as much as you can. See, documentation is a very important step because मैं जानता हूँ कि none of us are gonna live forever, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम डॉक्यूमेंट ना करें, क्योंकि अगर none of us are gonna live forever वाली सोच से ही चले फिर तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए. बट सीन ये नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है फॉर आवर फ्यूचर सेल्फ. एंड इवन इफ वी डाई, हु केयर्स मैन, एटलीस्ट हम लोग कुछ करते हुए तो मरे. और इस पर मेरी एक राइटिंग भी थी, मैं उसका PDF नीचे डाल दूंगा, कि लाइफ इज जस्ट द वेट ऑफ डेथ. ठीक है, लाइफ एक जर्नी है और उस जर्नी के दौरान हम पूरे टाइम पर डेथ का वेट कर रहे होते हैं. अब इस वेट के दौरान हम क्या क्या करते हैं, द थिंग्स दैट वी डू वाइल वी आर वेटिंग फॉर डेथ इज लाइफ. द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद डे टू डे एक्टिविटीज, द प्रोसेस ऑफ डूइंग सम थिंग्स वाइल वी आर वेटिंग फॉर डेथ इज लाइफ. क्योंकि डेथ तो इवेंचुअली अल्टीमेट ट्रूथ है ही है, बट उस अल्टीमेट ट्रूथ का वेट करते करते हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या परसीव किया, व्हाट वी परसीव्ड, क्रिएटेड, डॉक्यूमेंटेड इज व्हाट लाइफ इज. सो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट करो चीज़ों को. डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है. यू कैन मेक वीडियोज लाइक आई एम मेकिंग करेंटली. यू कैन मेक, you can write something, you can do journaling or anything. It is so important, क्योंकि यही सब एक्टिविटीज़ हैं जो लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगी. वरना तो ऐसे भाई, अब आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर आप एक एयरपोर्ट पे बैठे हो एंड यू आर करंटली वेटिंग फॉर अ फ्लाइट एंड द वेट इज ऑफ 3 hours. सो व्हाट विल यू चूज? स्टेयरिंग एट अ वॉल डूइंग नथिंग फॉर 3 hours और डूइंग एटलीस्ट समथिंग, एनी बोरिंग एक्टिविटी आप करना चाहोगे फॉर द नेक्स्ट 3 hours. सो दिस इज लाइफ. लाइक यही तो लाइफ है. आप बस कुछ ना कुछ मैं बिजी रखना चाहते हो अपने आप को until the death comes to you. So make sure आप बिजी रहो, but not in those things जिनका कोई वैल्यू नहीं बनता है. मतलब आई एम ट्राइंग टू से अपनी लाइफ को ऑप्टिमम पे जीने का ट्राई करना चाहिए. ठीक है, और ये बात मुझे जब से समझ में आई है तब से मैं कॉन्स्टेंटली लगा हुआ हूँ दैट आई लिव माई लाइफ टू इट्स ऑप्टिमम. नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैंने कितना, हाउ मच वेल्थ आई क्रिएटेड, मैंने कितने एम्पायर्स खड़े कर लिए, बिकॉज वो भी चला जाना है और ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी पोइट्रीज भी चली जानी है. बट इनमें लाइफ है और उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लाइफ नहीं है. और ये भी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी आपको एक्सपीरियंसेस देती हैं. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट गेनिंग एज मच एज एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव. एंड शायद उनमें से एक पर्सपेक्टिव को पाने के लिए आप यहाँ इस मेरे चैनल पे हो. सो यही है.
और यही 4 चीज़ें आप करोगे तब आपको धीरे धीरे दिखेगा दैट हाँ, लाइफ हैज़ मैनी मोर मीनिंग्स, लाइफ के बहुत सारे डायरेक्शन हैं। कभी भी बाइनरी में थिंकिंग को लिमिट मत करो कि 0 या 1। लाइफ के बहुत सारे डीपर, वाइडर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको आपको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और ये 4 वेज थे जिनसे आप डेफिनेटली कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में कर सकते हो। एंड एट द एंड आप कुछ तो मतलब आपको लगेगा व्हेन यू डाई, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, यू विल फील दैट यस आई डिड समथिंग थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने कंप्लीटली वेस्ट नहीं किया। आई डिड समथिंग आर्टिस्टिक, आई डिड समथिंग दैट इज फुल ऑफ लाइफ. So I think that's pretty much it from my side, and the PWCD method is great to live your life upon. And this was it from this video, and stay on this channel. ऐसी crazy और videos आने वाली हैं. अगर आपके पास कोई video का idea हो then you can comment down below.